Hello guys and welcome to the fresh episode of your favorite show about Gadgets 360 with Technical Guruji. और ये जो एपिसोड है दिस इज द स्पेशल वन बिकॉज आई एम शूटिंग स्ट्रेट फ्रॉम बार्सिलोना इन स्पेन और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बड़ा सा पूरा इवेंट है, काफी भीड़ भाड़ है यहाँ पे. This is the MWC 2024. So in this episode I'm going to tell you what is MWC, what's special this year और अंदर क्या-क्या नए-नए गैजेट्स हमें पहली बार देखने को मिले. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. Because the first question is, what is MWC? See, it's called Mobile World Congress. ये एक एनुअल इवेंट होता है हर साल इन द मंथ ऑफ फरवरी हियर इन बार्सिलोना स्पेन और यू कैन से दैट दिस इज द बिगेस्ट इवेंट of connected things. मतलब talking about smartphones, networks, all these AI things, this is the place because यहाँ पे सारे exhibitors आते हैं under one roof to showcase their best. और इस बार भी 2024 में हमको बहुत कुछ interesting देखने को मिला है because tech is always fun, gadgets are always fun and we always have something new, something exciting, something that's very cutting edge. और इस बार भी Again, we had so many of these gadgets. जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन से ब्रांड्स की तरफ से कौन से गैजेट्स मिले हैं हमको स्ट्रेट यहाँ पे इन द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024. Let's start with the hot one because यहाँ पे Lenovo ने कुछ नया शोकेस किया, a smartphone एंड अ लैपटॉप और दोनों काफी यूनिक थे. स्पीकिंग ऑफ स्मार्टफोन, ये एक मोटोरोला का स्मार्टफोन था. इट्स अ कॉन्सेप्ट फोन दैट वुड रोल अराउंड योर रिस्ट. इट वुड जस्ट रैप अराउंड और ये एक काइंड ऑफ हाइब्रिड होगा बिटवीन मे बी अ स्मार्ट ब्रेसलेट एंड अ स्मार्टफोन. फील्स लाइक अ नॉर्मल फोन व्हाइल यू नो इट्स अनफोल्डेड बट द मोमेंट यू बेंड इट अप ये कर्व हो सकता है और यू कैन यूज इट लाइक अ टेबल स्टैंड. आप इसको इसके अराउंड रैप कर सकते हैं. इट वॉज टू much fun to see this Motorola's new phone in action. मोटोरोला का कॉन्सेप्ट बेंडिंग फोन एक 6.9 इंच की बेंडिंग स्क्रीन के अराउंड बिल्ट है एंड व्हाइल इट इज इजी टू बी इम्प्रेस्ड बाय अ फोल्डिंग स्क्रीन, टू नोट स्मार्टफोन फॉर्म फैक्टर में उसकी इंटरनल सर्किटरी भी बेंड हो रही है एंड उस हिसाब से प्लान्ड है. इंप्रेसिव. सो ऑफ कोर्स दिस फॉर्म फैक्टर ब्रिंग्स बेनिफिट्स लाइक न्यूअर ergonomic यूसेज पॉसिबिलिटीज, न्यूअर वेज टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटिंग डिवाइसेज एंड इवन फ्यूचर में मल्टी फंक्शनैलिटी भी प्लान हो सकती है. Now guys, speaking of the laptop, oh what an amazing device it was. For the first time we saw a laptop with a transparent screen. जी हाँ, जो इसका स्क्रीन था वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था. आप आर पार देख सकते हैं. एट द सेम टाइम यू कैन यूज इट लाइक अ नॉर्मल लैपटॉप. मतलब क्रेजी टू बी ऑनेस्ट. जब मैंने इसको यूज किया आई कुडंट बिलीव माय आईज दैट इज रियली हैपनिंग बिकॉज हमने ट्रांसपेरेंट स्क्रीन्स देखे हैं पहले बट दे आर मोस्टली ट्रांसल्यूसेंट. जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत पार्शियल होती है बट दिस टाइम इट वॉज वे मोर और हम क्लियरली ऑलमोस्ट ऑन द अदर साइड क्या है वो देख पा रहे हैं while using this laptop. And it was an AI powered laptop, again a concept device, but then again who knows, in future we might have these devices in reality, in action, and you know the other person on the other side could also see कि आप laptop पे क्या काम कर रहे हैं. Yeah, that's a catch, but then again it looks futuristic as you see in all the Hollywood movies, makes you feel like Tony Stark. Lenovo का ThinkBook transparent display laptop concept is a really long name for a micro LED display that is 17.3 inches in size and transparent by feature. ये देखने में काफी हाई टेक है because of a transparent screen, a transparent keyboard area और एक floating footpad design. Do note, transparent का मतलब देखने में difficulty नहीं है.
आपको स्क्रीन पे हाई कॉन्ट्रास्ट कैपेबिलिटी मिलती है एंड स्क्रीन 1000 निट्स तक ब्राइट हो जाती है फॉर आउटडोर एंड इंडोर विजिबिलिटी। लैपटॉप क्रिएटिव्स की तरफ काफी ज्यादा ट्यून्ड लगता है सिंस देयर इज सपोर्ट फॉर अ पेन, प्लस देयर इज सीमलेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कंटेंट कैपेबिलिटीज। दोस्तों आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट Xiaomi एंड Xiaomi ने यहाँ पे अभी शोकेस किया Xiaomi द कॉन्सेप्ट वाज बेसिकली फोन, कार एंड होम. So a combination of these things, that how technology kind of blends together and everything is powered by the Xiaomi's Hyper OS. Speaking of phone, हमको मिलती है Xiaomi की 14 series. It has the Xiaomi 14 as a base variant. Quite interesting smartphone, packing all the latest hardware. But the star of the show was the Xiaomi 14 Ultra. This phone comes with cutting-edge Leica optics, amazing set of hardware, is like a proper camera smartphone, packing everything possible. और यहाँ पे कैमरा ग्रिप भी है to give you this comfortable professional grip to make sure कि जो भी आप फोटोज ले रहे हैं वो बहुत अच्छे से आप कैप्चर कर पाएं. तो ये जो Xiaomi का 14 Ultra है ये भी हमने देखा and feels like a flagship phone, but the problem is that Xiaomi is not able to sell their premium phones in India in big numbers. हमने देखा in the past the acceptance for Xiaomi in India is really low. You know the obvious reasons, that beyond a certain price point, people in India prefer Apple, they prefer Samsung, they prefer OnePlus, they prefer Google. Xiaomi is not really up there in terms of choices, but Ultra ये phone launch तो हुआ है. इंडिया में I doubt that we'd see this. लेकिन Xiaomi ने एक और चीज दिखाई हमको and it was the Xiaomi car. Honestly speaking, it was more of a blend between a Porsche, a Tesla and a McLaren. Feels like these Chinese brands sometimes when they kind of get inspiration, or I would say too much inspiration, and just implement their ideas into reality. While I was in China, some time ago, मैंने देखा बहुत बार कि the car looks like a BMW, but it's not really a BMW. The car looks like a Range Rover, but it's not a Range Rover. Something similar happened here because the headlights of this Xiaomi car called the SU7 Pro looks like a McLaren 720S. But oh no, it's not a McLaren. The profile looks like a Tesla. No, but it's not a Tesla. From the back, it looks like the Porsche, but it's not a Porsche. It's kind of a mix of all these three things together. But ये जो Xiaomi की कार है, ये भी Xiaomi ने showcase किया, and they have a big vision of being in the top 5 of the global automobile manufacturers. But future बताएगा कि क्या होने वाला है with this Xiaomi car. I don't think this car is going to come to India, but who knows what's going to happen in the future. Friends, Tecno also had some amazing one wherein they showcased the technologies in terms of smartphone cameras and how they are able to use AI. At the same time, हमने देखा Tecno की तरफ से their rollable phone, the Phantom Ultimate. It was a concept, but देखने में काफी interesting लगा. And then they had different sets of phones, with different back panels, all the technologies coming in. They also showcased their dog. It was the dynamic one. There was a VR headset as well. I would say just like a छोटा सा आप चश्मा पहन रहे हो और आप अपने फोन से या एक कंसोल से गेम्स खेल सकते हो while on the go. So this was all coming from Tecno. Rolling and folding phones aren't new, neither is this one, but Tecno ने attempt किया to innovate within their own ecosystem of thinking and resources, and that is good. Phantom Ultimate एक 6.55 इंचेस की कन्वेंशनल स्क्रीन है जो 7.11 इंचेस का टैबलेट लाइक फॉर्म फैक्टर ले लेती है एट द प्रेस ऑफ ए बटन, एंड इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट टू डू सो. टेक्नो क्लेम्स कि Phantom Ultimate का अनफर्लिंग एक्शन हैपेंस बिटवीन 1.2 एंड 1.3 सेकंड्स. टेक्नो का डायनामिक वन एक बायोमॉर्फिक रोबोट डॉग है जिसको एआई इंटरैक्शन कैपेबिलिटीज के साथ पुश किया जा रहा है. इट इज सराउंडेड विद सेंसर्स लाइक बायनोक्यूलर सेंसर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स एंड इंटेल्स रियल सेंस D430 डेप्थ कैमरा मॉड्यूल. इसको एक स्मार्टफोन ऐप, रिमोट कंट्रोलर्स एंड वॉइस कमांड से कंट्रोल किया जा सकता है, एंड सिंस इट कैन वॉक, जंप,
हॉप, शेक हैंड्स एंड मोर। ये शायद उन लोगों को टारगेट किया जा सकता है जिनको पेट्स पसंद हैं बट रियल पेट्स नहीं रख सकते हैं। टेक्नो ने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिटी को डिफाइन करते हुए एक गेमिंग कंसोल भी लॉन्च किया एंड दे क्लेम दैट द पॉकेट गो इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट AR handheld gaming console running on an AMD Ryzen 7 8840HS processor, 16 GB of LPDDR5 RAM and 1 TB of PCIe 4.0 SSD storage। ये एक पेयर ऑफ AR ग्लासेस के थ्रू एक इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। Friends, I'll tell you what, Samsung had a huge booth here at MWC, but my question was, what is Samsung showcasing? Because हमने देखा recently, Samsung has already launched their new S24 series. We all know how's the phone like. चारों तरफ, the buzz is about Galaxy AI, but what's next? And Samsung surprised us because Samsung showcased their Galaxy Ring. Although it was behind a glass, we couldn't touch it, we couldn't feel it, but we could clearly see it up front that how the ring is going to be. The three colors showcased, black, silver and gold. It comes in 9 different sizes and as per Samsung, it would act as a nice companion with a Galaxy Watch. तो अगर आप एक स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, ये रिंग साथ में अगर आप पहनते हैं, the ring would provide very accurate data to the watch just in case अगर let's say आप वॉच उतार के चार्ज पे भी लगा देते हैं because the battery is not so much, still the ring is continuously tracking all your vitals right throughout और यहाँ पे the battery would be approximately in the range of a week to 9 days. काफी इंटरेस्टिंग ये रिंग लगती है. Coming soon in the market, most probably with the Samsung Galaxy Z Fold 6 and the Z Flip series जब आएगी I think in the month of July. But this ring, I would say, yeah, it looks totally futuristic. A small piece of tech that you just wear around your finger to know more about what's happening inside your body. So friends, right next to Samsung, it was Honor, and Honor showcased 2 of their latest smartphones, Honor Magic 6 Pro and Honor Magic V2 RSR, aka the Porsche edition. और यहाँ पे जो Magic 6 Pro है, it looks like an interesting smartphone considering what all it packs. It has for the first time, पहली बार दुनिया में 180 megapixels का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा that goes all the way up to 100x. साथ में हमारे पास में है 8 Gen 3. We have an AI powered OS, is the latest Magic OS 8 which has AI. Honor says it's intent based, as in like जब यूजर को कुछ काम करना है the OS knows it already और वो जल्दी से बहुत ही मिनिमल स्टेप्स में वो काम पूरा कर जाते हैं. At the same time अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की, they have a new kind of technology called the silicon carbide. It's a 2nd gen battery because the phone is quite slim. At the same time it packs a 5600 mAh battery. तो ये था the latest 8 Gen 3 वाला Honor Magic 6 Pro. और फिर हमने देखा काफी sleek, काफी lightweight, at the same time काफी powerful Honor Magic V2 का नया Porsche edition. It gives you all the vibes of a 911 with all the lines and all the curves. The phone really feels very premium. Let's see if Honor brings these 2 phones to the Indian market. Honor का Magic 6 Pro starts impressing with its specifications. The 6.8-inch LTPO screen maxes out at 120Hz, 1600 of all-screen peak brightness and then a claimed 5000 nits of HDR peak brightness. फोन तीनों प्रैक्टिकल कैमरा रेंजेस ऑफर करता है। 50 मेगापिक्सल का मेन सुपर डायनामिक ऑनर फैल्कन कैमरा विच कम्स विद अ वेरिएबल एपर्चर सिस्टम बिटवीन f1.4 and f2.0. दी 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा कैन आल्सो एक्ट लाइक ए मैक्रो कैमरा क्योंकि ये 2.5 सेंटीमीटर फार ऑब्जेक्ट्स पर भी फोकस कर लेता है एंड देन ए 180 मेगापिक्सल 2.5x की ऑप्टिकल जूम एंड 100x की डिजिटल जूम कैपेबिलिटीज वाला एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस विद OIS. 5600 mAh की बैटरी प्रॉमिस करेगी एक दिन से भी ज्यादा का यूसेज. AI powered Magic OS 8 running on Snapdragon 8 Gen 3 chipset offers great multitasking and smooth usage. Friends, nothing took the spotlight with their Nothing Phone 2A. It was just a design reveal. We didn't get much details about the device because the phone is yet to be launched. The launch is happening on 5th of March in the Indian market and basically it's a global launch happening in India. लेकिन यहाँ पे हमने देखा how is this new Nothing Phone going to look. Gives you the feeling of an alien face with 2 eyes in the center, contains all the transparency elements as with Nothing, कि सभी devices हमको transparency
ट्रांसपेरेंसी मिलती रहती है. तो दिस इज द नथिंग फोन 2A. Nothing had a very small at the same time quite hyped up event around the design reveal, and I would say it actually was something that everyone was waiting for. और finally हमने देखा कि Nothing का फोन 2A कैसा है. In my prediction, I would say it would be in the range of around 25,000 rupees. और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मिड रेंज फोन हो सकता है फॉर ऑल द नथिंग फैंस who want something unique, who want the flavor of the glyph interface, who want that फोन में कुछ उनको एक अच्छा इंटरेस्टिंग डिजाइन मिल जाए, एक क्लीन UI मिल जाए. They want to try nothing, but if the phone 1 or phone 2 was beyond their reach, I think phone 2A is a good answer. 5th को ही नथिंग अपने फोन 2A के साथ नेक बैंड्स प्रो एंड बड्स भी लॉन्च करने वाले हैं. बट MWC पे while they kept a lot of details about the phone 2A under wraps, नथिंग ने एक अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी पोस्ट करी है on their social media handles. To us, honestly, the centered camera design looks really nice, neat and symmetric. ग्लिफ इंटरफेस हम सब ने देखा है एंड इस बार ट्रांसपेरेंसी के डिजाइन एलिमेंट्स के साथ बैक के बॉटम हाफ में इफ यू स्क्विंट एट इट यू सी टाइप्स में द नंबर 2 भी इंटीग्रेटेड है. Guys, additionally, we had so many exhibitors displaying multiple things. I mean, there was a concept of flying cars. We have been seeing these things for years now. हर साल हमको देखने को मिलती है कि कुछ एक नया डिज़ाइन लेके आई है फ्लाइंग कार्स. Now, I'm not sure कि ये रियलिटी में कब होने वाला है. Some time for sure that हम देखेंगे रियलिटी में फ्लाइंग कार्स को हमारे चारों तरफ उड़ते हुए. Would be an amazing means of transportation. But yeah, we saw again this time as well that how the future is visioned. Let's see कि क्या ऐसा होता है या नहीं. वैसे what's your take about flying cars? Let me know by writing at tg@ndtv.com. At the same time हमने humanoid robot भी देखा from Etisalat and और यहाँ पे again it gives all nice vibes, but then again the biggest question is, are we ready for this one? Because you know, technology is just skyrocketing all across, all around us. But now it's a big question कि future में while you talk about AI, you talk about humanoids, you talk about all these machines around us, how exactly would be the surroundings, how exactly would be the environment, and I mean, is it something that we really want? But then again, we had a demo of that as well. बहुत सारे और इंटरेस्टिंग बूथ्स में काफ़ी कुछ था हर साल की तरह इस बार भी right here at the Mobile World Congress. वैसे आपके लिए आई एम श्योर इस एपिसोड में आपको बहुत कुछ मिला होगा. Stay tuned for the next week's episode because I have something very special coming to you. I'll show you up close everything about the Nothing Phone 2A. We might have another gadget as well. तो आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते. That's all for this week. Cutting straight from here in Barcelona, Spain. See you next time. Have a good day.